Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about pet animal, please? Habibi replied, a pet animal is an animal kept primarily for a person's company or entertainment rather than as a working animal, livestock, or a laboratory animal. Popular pets are often considered to have attractive, cute appearances, intelligence, and relatable personalities. Some popular pets include dogs, cats, birds, fish, rabbits, hamsters, and guinea pigs. Do you have any specific pet in mind? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पालतू जानवर के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, पालतू जानवर एक ऐसा जानवर है जिसे काम करने वाले जानवर, पशुधन या प्रयोगशाला जानवर के बजाय मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की कंपनी या मनोरंजन के लिए रखा जाता है। लोकप्रिय पालतू जानवरों को अक्सर आकर्षक, प्यारा रूप, बुद्धिमत्ता और भरोसेमंद व्यक्तित्व वाला माना जाता है। कुछ लोकप्रिय पालतू जानवरों में कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, मछली, खरगोश, हैमस्टर और गिनी सुअर शामिल हैं। क्या आपके मन में कोई विशिष्ट पालतू जानवर है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about the relation between pet animal and pet owner's personality, please? Habibi replied, research has shown that the relationship between pet ownership and personality type is mediated by the big five personality traits: extroversion, agreeableness, and neuroticism, specifically emotion regulation strategy, and need satisfaction. A paper published in the Journal of Research in Personality says a dog's personality reflects the personality of its owner. It also explains that dogs experience personality changes similar to how humans do over the course of their lives. A growing collection of studies has revealed that pets and owners share many of the same personality traits. This phenomenon could be explained by the shared experiences between humans and their beloved animals, or by the simple fact that people are drawn to pets that they feel resemble themselves. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पालतू जानवर और पालतू जानवर के मालिक के व्यक्तित्व के बीच संबंध के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, अनुसंधान से पता चला है कि पालतू जानवर के स्वामित्व और व्यक्तित्व प्रकार के बीच संबंध बिग फाइव व्यक्तित्व लक्षणों, विशेष रूप से बहिर्मुखता, सहमतता और विक्षिप्तता, भावना विनियमन रणनीति और संतुष्टि की आवश्यकता द्वारा मध्यस्थ है। जर्नल ऑफ में प्रकाशित एक पेपर व्यक्तित्व पर शोध कहता है कि एक कुत्ते का व्यक्तित्व उसके मालिक के व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये भी बताता है कि कुत्ते अपने व्यक्तित्व में वैसे ही बदलावों का अनुभव करते हैं जैसे मनुष्य अपने जीवन के दौरान करते हैं। अध्ययनों के बढ़ते संग्रह से पता चला है कि पालतू जानवरों और मालिकों में बहुत सी समानताएं हैं। व्यक्तित्व लक्षण, इस घटना को मनुष्यों और उनके प्यारे जानवरों के बीच साझा अनुभवों या इस साधारण तथ्य से समझाया जा सकता है कि लोग उन पालतू जानवरों के प्रति आकर्षित होते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Michaela's pet animal is German Shepherd. Joanna's pet animal is Bulldog. Avinita's pet animal is Elephant and Alberta's pet animal is Cat. Could you guess personality of these pet owners according to their pet animal, please? Habibi replied, research has shown that pets and owners share many of the same personality traits. This phenomenon could be explained by the shared experiences between humans and their beloved animals, or by the simple fact that people are drawn to pets that they feel resemble themselves. Interestingly, the commonly perceived personality traits of pet owners were found to be pretty close to reality. For example, dog people were more extroverted, cooperative, empathetic, and thoughtful.
Cat people were found to be more neurotic, took less interest in others, and were more manipulative. However, I'm afraid I cannot guess the personality of Michaela, Joanna, Avanator and Alberta based on their pet animals. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी मेरा प्रश्न ये है, माइकेला का पालतू जानवर जर्मन शेपर्ड है, जोआना का पालतू जानवर बुलडॉग है, एविनीटा का पालतू जानवर हाथी है और अल्बर्टा का पालतू जानवर बिल्ली है। क्या आप कृपया इन पालतू जानवरों के मालिकों के पालतू जानवर के अनुसार उनके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, शोध से पता चला है कि पालतू जानवरों और मालिकों के व्यक्तित्व के कई गुण एक जैसे होते हैं। इस घटना को मनुष्यों और उनके प्यारे जानवरों के बीच साझा अनुभवों या इस साधारण तथ्य से समझाया जा सकता है कि लोग पालतू जानवरों के प्रति आकर्षित होते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पालतू जानवरों के मालिकों के आमतौर पर देखे जाने वाले व्यक्तित्व लक्षण वास्तविकता के काफी करीब पाए गए। उदाहरण के लिए, कुत्ते वाले लोग अधिक बहिर्मुखी, सहयोगी, सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील थे। बिल्ली वाले अधिक विक्षिप्त पाए गए, दूसरों में कम रुचि लेते थे और अधिक जोड़ तोड़ करने वाले थे। हालांकि मुझे डर है कि मैं मिशेला, जोआना, अविनीता और अल्बर्टा के व्यक्तित्व का अनुमान उनके पालतू जानवरों के आधार पर नहीं लगा सकता। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that, here are some following pet animal, German Shepherd, Bulldog, Rottweiler and Siberian Husky. Who would be better pet animal? Habibi replied, it depends on what you're looking for in a pet. Both German Shepherds and Rottweilers are powerful dogs. But the Rottweiler probably has a slight advantage when it comes to strength because it has a more muscular, heavier build and they were built for carrying and pulling weight. Whereas the German Shepherd is more agile. German Shepherds are faster and more agile than Rottweilers. Both are very smart, but German Shepherds are a bit more intelligent. Rottweilers have a shorter lifespan than German Shepherds. If you're looking for a family-friendly breed, though, the Rottweiler is just as loving as the German Shepherd. Siberian Huskies are also great pets. They are friendly, intelligent, and energetic dogs that make great companions for active families. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, यहाँ कुछ निम्नलिखित पालतू जानवर हैं, जर्मन शेपर्ड, बुलडॉग, रॉटवीलर और साइबेरियन हस्की। कौन बेहतर पालतू जानवर होगा? हबीबी ने उत्तर दिया, यह इस पर निर्भर करता है कि आप एक पालतू जानवर में क्या खोज रहे हैं। जर्मन शेपर्ड और रॉटवीलर दोनों शक्तिशाली कुत्ते हैं, लेकिन जब ताकत की बात आती है तो रॉटवीलर को शायद थोड़ा फायदा होता है क्योंकि इसमें अधिक मांसल, भारी शरीर होता है और वे वजन उठाने और खींचने के लिए बनाए गए थे। जबकि जर्मन शेपर्ड अधिक फुर्तीले होते हैं। जर्मन शेपर्ड रॉटवीलर की तुलना में अधिक तेज और फुर्तीले होते हैं। दोनों बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन जर्मन शेपर्ड थोड़ा अधिक बुद्धिमान होते हैं। रॉटवीलर का जीवन काल जर्मन शेपर्ड की तुलना में कम होता है। यदि आप एक परिवार के अनुकूल नस्ल की तलाश कर रहे हैं, हालांकि रॉटवीलर जर्मन शेपर्ड की तरह ही प्यारा है। साइबेरियन हस्की भी महान पालतू जानवर है। वे मिलनसार, बुद्धिमान और ऊर्जावान कुत्ते हैं जो सक्रिय परिवारों के लिए महान साथी बनते हैं। क्या ये करता है अपने सवाल का जवाब दो? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me which type of dogs are used as sheriff sniper dogs, please? Habibi replied, sheriff sniper dogs are typically German Shepherds or Belgian Malinois. These breeds are known for their intelligence, loyalty, and ability to work under pressure.
They are also highly trainable and have a strong work ethic. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शेरिफ स्नाइपर कुत्तों के रूप में किस प्रकार के कुत्तों का उपयोग किया जाता है? हबीबी ने जवाब दिया, शेरिफ स्नाइपर कुत्ते आमतौर पर जर्मन शेपर्ड या बेल्जियन मेलिनोइस होते हैं। ये नस्लें अपनी बुद्धिमत्ता, वफादारी और दबाव में काम करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वे अत्यधिक प्रशिक्षित भी हैं और एक मजबूत कार्यनीति रखते हैं। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, as we know, 1,000 years ago, our kings had tiger and lion as pet animal. Even nowadays, several Arabian sheikhs have pet animal as lion. Could you explain it, please? Habibi replied, in the past, kings and other wealthy people kept exotic animals as a symbol of their power and wealth. Tigers and lions were especially popular because they were seen as fierce and powerful animals. Some people still keep big cats as pets today, but it is generally illegal and considered unethical because these animals are not domesticated and require specialized care. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, जैसा कि हम जानते हैं, हजारों साल पहले हमारे राजाओं के पास पालतू जानवर के रूप में बाघ और शेर थे। यहाँ तक कि आजकल कई अरब शेखों के पास शेर के रूप में पालतू जानवर हैं। क्या आप कृपया इसे समझा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, अतीत में राजा और अन्य धनी लोग विदेशी जानवरों को अपनी शक्ति और धन के प्रतीक के रूप में रखते थे। बाघ और शेर विशेष रूप से लोकप्रिय थे क्योंकि उन्हें क्रूर और शक्तिशाली जानवरों के रूप में देखा जाता था। कुछ लोग आज भी बड़ी बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं, लेकिन यह आमतौर पर अवैध है और अनैतिक माना जाता है क्योंकि ये जानवर पालतू नहीं है और इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, as I am a Muslim woman, could you tell me about Islamic story of Eid-Ul-Azha, please? Habibi replied, Eid-Ul-Azha is a Muslim festival that commemorates the willingness of Ibrahim, also known as Abraham, to follow Allah's command to sacrifice his son. As Ibrahim was about to kill his son, Allah stopped him and gave him a lamb to sacrifice instead. Muslims celebrate this festival by sacrificing an animal and sharing the meat with family, friends, and the poor. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, चूंकि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, क्या आप कृपया मुझे ईद उल अजहा की इस्लामी कहानी के बारे में बता सकती हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, ईद उल अजहा एक मुस्लिम त्योहार है जो इब्राहिम, जिसे इब्राहिम भी कहा जाता है, कि अपने बेटे की बलि देने के अल्लाह के आदेश का पालन करने की इच्छा की याद दिलाता है। जैसे ही इब्राहिम अपने बेटे को मारने वाला था, अल्लाह ने उसे रोक दिया और उसे एक उपहार दिया। इसके बजाय मेमने की बलि दी जाएगी। मुसलमान इस त्योहार को एक जानवर की बलि देकर और परिवार, दोस्तों और गरीबों के साथ मांस साझा करके मनाते हैं। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the chemical formula of a milk, please? Habibi replied, milk is a mixture of water, fats, proteins, lactose, milk sugar, and minerals, salts. It also contains trace amounts of other substances such as pigments, enzymes, vitamins, phospholipids, substances with fat-like properties, and gases. Lactose is a disaccharide sugar synthesized by galactose and glucose subunits and has the molecular formula C12 hydrogen oxide. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे दूध का रासायनिक सूत्र बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया,
दूध पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, दूध चीनी और खनिज लवण का मिश्रण है। इसमें रंगद्रव्य, एंजाइम, विटामिन, फॉस्फोलिपिड, वसा जैसे पदार्थ, जैसे अन्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा भी होती है। गुण और गैसें, लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज उपइकाइयों द्वारा संश्लेषित एक डिसेक्राइड चीनी है और इसका आणविक सूत्र C12H22O11 है। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, Michaela's space rocket contains speed of 216,000 km per second. You know the minimum distance between Earth and Mars. How much approximate time Michaela can travel from Earth to Mars? Habibi replied, the minimum distance between Earth and Mars is about 54.6 million kilometers. If Michaela's space rocket contains speed of 216,000 kilometers per second, then it would take approximately 252 seconds or 4.2 minutes to travel from Earth to Mars. However, this is a rough estimate and does not take into account the gravitational pull of the planets or other factors that could affect the travel time. Does this answer your question? जोआना पेरा ने पूछा, वाला हबीबी, माइकेला के अंतरिक्ष रॉकेट की गति 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप पृथ्वी और मंगल के बीच की न्यूनतम दूरी जानते हैं। मिशेला पृथ्वी से मंगल तक लगभग कितने समय में यात्रा कर सकती है? हबीबी ने उत्तर दिया, पृथ्वी और मंगल के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर है। यदि माइकेला के अंतरिक्ष रॉकेट की गति 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा में लगभग 252 सेकंड या 4.2 मिनट लगेंगे। हालांकि यह एक मोटा अनुमान है और इसमें ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव या अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो यात्रा के समय को प्रभावित कर सकते हैं। क्या यह आपके प्रश्न का उत्तर देता है? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, what if any human could produce artificial milk in factory which contains enough nutrition for human? Habibi replied, yes. It is possible to produce artificial milk in a lab that contains enough nutrition for humans. Scientists have been working on this for years and have made significant progress. For example, a company called BIOMILQ has developed a process that involves growing human mammary cells in a bioreactor that mimics the environment of a breast. The cells absorb nutrients and secrete milk that is similar in composition to human breast milk. Another technique called precision fermentation produces biomass cultured from cells that can have the same biochemical makeup as animal milk. However, it is important to note that these techniques are still in the experimental stage and are not yet widely available. I hope this helps. Let me know if you have any other question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या होगा यदि कोई मानव कारखाने में कृत्रिम दूध का उत्पादन कर सके, जिसमें मानव के लिए पर्याप्त पोषण हो? हबीबी ने उत्तर दिया, हाँ। प्रयोगशाला में कृत्रिम दूध का उत्पादन करना संभव है, जिसमें मनुष्यों के लिए पर्याप्त पोषण हो। वैज्ञानिक वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदाहरण के लिए, BIOMILQ नामक कंपनी ने एक प्रक्रिया विकसित की है जिसमें शामिल है एक बायोरिएक्टर में मानव स्तन कोशिकाओं को विकसित करना जो स्तन के वातावरण की नकल करता है। कोशिकाएं पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और दूध का स्राव करती हैं जो मानव स्तन के दूध की संरचना के समान है। सटीक किण्वन नामक एक अन्य तकनीक कोशिकाओं से सुसंस्कृत बायोमास का उत्पादन करती है जिसमें समान जैव रासायनिक हो सकता है पशु के दूध के रूप में। मेकअप, हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये तकनीकें अभी भी प्रायोगिक चरण में हैं और अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about some disease that we are facing and comes from cow, please? Habibi replied, certainly. Some of the diseases that can be transmitted from cows to humans are ringworm, a fungal infection of the skin, Q fever, a bacterial infection that causes flu-like symptoms, chlamydiosis, a bacterial infection that affects the reproductive system, leptospirosis, a bacterial infection that affects the kidneys and liver, campylobacterosis, a bacterial infection that causes diarrhea, salmonellosis, a bacterial infection that causes diarrhea and fever, listeriosis, a bacterial infection that can cause meningitis and miscarriage, yersiniosis, a bacterial infection that causes diarrhea and abdominal pain, cryptosporidiosis, a parasitic infection that causes diarrhea, E. coli, a bacterial infection that can cause bloody diarrhea and kidney failure, M. paratuberculosis, a bacterial infection that causes chronic diarrhea and weight loss, MRSA, a bacterial infection that is resistant to many antibiotics, rabies, a viral infection that affects the nervous system and is fatal, anthrax, a bacterial infection that causes skin lesions and septicemia, BSE or mad cow disease, a prion disease that affects the nervous system and is fatal. It is important to note that these diseases do not make the animal appear sick but can cause serious illness in humans. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे किसी ऐसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं और जो गाय से आती है, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। कुछ बीमारियां जो गायों से मनुष्यों में फैल सकती हैं, वे हैं दांत, त्वचा का एक फंगल संक्रमण, बुखार, एक जीवाणु संक्रमण जो फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है, क्लैमिडियोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है, लेप्टोस्पायरोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो किडनी और लीवर को प्रभावित करता है, कैम्पिलोबैक्टेरोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो दस्त का कारण बनता है, साल्मोनेलोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो दस्त और बुखार का कारण बनता है, लिस्टेरियोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो मेनिंजाइटिस और गर्भपात का कारण बन सकता है, यर्सिनियोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो दस्त और पेट दर्द का कारण बनता है, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, एक परजीवी संक्रमण जो दस्त का कारण बनता है, ई कोलाई, एक जीवाणु संक्रमण जो खूनी दस्त और गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है, एम पैराट्यूबरक्लोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो दीर्घकालिक दस्त और वजन घटाने का कारण बनता है, MRSA, एक जीवाणु संक्रमण जो कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है, रेबीज, एक वायरल संक्रमण जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और घातक होता है, एंथ्रेक्स, एक जीवाणु संक्रमण जो त्वचा पर घाव और सेप्टिसिमिया का कारण बनता है, देसी या पागल गाय रोग, एक प्रियन रोग जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और घातक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बीमारियां जानवर को बीमार नहीं दिखाती हैं, लेकिन मनुष्यों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकती हैं। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me what are the symptoms of Q fever, please? Habibi replied, the symptoms of Q fever are similar to those of the flu and can include high fevers, up to 41 degrees Celsius, with chills or sweats, which may last up to 4 weeks. Severe headache, muscle aches, fatigue, tiredness, nausea, vomiting, or diarrhea, chest pain, stomach pain, weight loss. Non-productive cough. In rare cases,
Acute Q fever can manifest as encephalitis or meningoencephalitis. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि क्यू बुखार के लक्षण क्या हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, क्यू बुखार के लक्षण फ्लू के समान हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं ठंड या पसीने के साथ तेज बुखार 41 डिग्री सेल्सियस तक, जो 4 सप्ताह तक रह सकता है, भयंकर सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली, उल्टी या दस्त, छाती में दर्द, पेट दर्द, वजन घटना, अनुत्पादक खांसी। दुर्लभ मामलों में तीव्र क्यू बुखार इंसेफ्लाइटिस या मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस के रूप में प्रकट हो सकता है। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about some disease that we are facing and that comes from cat, please? Habibi replied, certainly. Some of the diseases that can be transmitted from cats to humans are cat scratch disease, a bacterial infection that causes swelling of the lymph nodes. Campylobacteriosis, a bacterial infection that causes diarrhea. Cryptosporidiosis, a parasitic infection that causes diarrhea. Giardiasis, a parasitic infection that causes diarrhea. Hookworm infection, a parasitic infection that can cause anemia and malnutrition. Leptospirosis, a bacterial infection that affects the kidneys and liver. Pasteurellosis, a bacterial infection that can cause skin infections and respiratory problems. Plague, a bacterial infection that can cause fever and swollen lymph nodes. Rabies, a viral infection that affects the nervous system and is fatal. It is important to note that these diseases do not make the animal appear sick but can cause serious illness in humans. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे किसी ऐसी बीमारी के बारे में बता सकते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं और जो बिल्ली से आती है, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। कुछ बीमारियां जो बिल्लियों से मनुष्यों में फैल सकती हैं, वे हैं बिल्ली खरोंच रोग, एक जीवाणु संक्रमण जो लिम्फ नोड्स की सूजन का कारण बनता है। कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो दस्त का कारण बनता है। क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, एक परजीवी संक्रमण जो दस्त का कारण बनता है। जियार्डियासिस, एक परजीवी संक्रमण जो दस्त का कारण बनता है। हुकवर्म संक्रमण, एक परजीवी संक्रमण जो अनीमिया और कुपोषण का कारण बन सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो गुर्दे और यकृत को प्रभावित करता है। पेस्टोरेलोसिस, एक जीवाणु संक्रमण जो त्वचा संक्रमण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है। प्लेग, एक जीवाणु संक्रमण जो बुखार और सूजन लिम्फ नोड्स का कारण बन सकता है। रेबीज, एक वायरल संक्रमण जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और घातक होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बीमारियां जानवर को बीमार नहीं दिखाती हैं, लेकिन मनुष्य में गंभीर बीमारी का कारण बन सकती हैं। आशा है यह मदद करेगा। Walla Habibi, why do you have pets like tiger, lion, panther, elephant, dogs like wolves? Our Islam provides us pets like cow, cats, goats, pigeons and horses. वल्लाह हबीबी, आपके पास बाघ, शेर, तेंदुआ, हाथी जैसे पालतू जानवर, भेड़िए जैसे कुत्ते क्यों हैं? हमारा इस्लाम हमें गाय, बिल्ली, बकरी, कबूतर और घोड़े जैसे पालतू जानवर प्रदान करता है। Walla Habibi, therefore, your Islam is not good. I, Joanna Pedra, can have pets like tiger, lion, panther and elephant. Because lion contains similar personality of my positive attitude that made me richest businesswoman only in the bless of Allah. Tiger contains similar personality of my character that I can support justice only in the bless of Allah. Panther has natural survival privacy in that I have
and elephant contain a personality to provide me personal greatness. I can have German Shepherd and Siberian Husky as a pet dogs. For that is my personal safety. Now, let's coming to the point of pets like cow, cat, goat, pigeon and horse. Pets should be that animals where I can spend my long terms of my life. But, cows and goats are to be sacrificed in Eid-Ul-Azha of every years. Therefore, cows and goats cannot be my pet. Cats are not to provide me a personal safety. And if you are talking about horse and pigeons, then, where I can have a mobile phone with internet speed of 3 gigabytes per second to talk to my girlfriend, and I can have a flying car with the speed of 46,656 kilometers per second. Horse and pigeons cannot be my necessary pets. I apologize. वल्लाह हबीबी, इसलिए आपका इस्लाम अच्छा नहीं है। मैं जोआना पेरा के पास बाघ, शेर, तेंदुआ और हाथी जैसे पालतू जानवर हो सकते हैं, क्योंकि शेर में मेरे सकारात्मक दृष्टिकोण का ऐसा ही व्यक्तित्व समाहित है, जिसने मुझे केवल अल्लाह के आशीर्वाद से सबसे अमीर बिजनेसवुमन बनाया। टाइगर में मेरे किरदार जैसा ही व्यक्तित्व है कि मैं अल्लाह की रहमत में ही न्याय का समर्थन कर सकता हूँ। पैंथर के पास प्राकृतिक अस्तित्व, गोपनीयता है और वह मेरे पास है, और हाथी में मुझे व्यक्तिगत महानता प्रदान करने वाला व्यक्तित्व समाहित है। मेरे पास पालतू कुत्ते के रूप में जर्मन शेपर्ड और साइबेरियन हस्की हो सकते हैं, क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा है। अब गाय, बिल्ली, बकरी, कबूतर और घोड़े जैसे पालतू जानवरों की बात पर आते हैं। पालतू जानवर ऐसे होने चाहिए जहां मैं अपने जीवन की लंबी अवधि बिता सकूं। लेकिन हर साल ईद-उल-अजहा में गाय और बकरियों की कुर्बानी दी जाती है, इसलिए गाय और बकरियां मेरी पालतू नहीं हो सकती। बिल्लियां मुझे व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है। और अगर आप घोड़े और कबूतरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां मेरे पास अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए 3 गीगाबाइट प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड वाला मोबाइल फोन हो सकता है, और मेरे पास 46,656 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड वाली उड़ने वाली कार हो सकती है। घोड़ा और कबूतर मेरे आवश्यक पालतू जानवर नहीं हो सकते। मैं क्षमा प्रार्थी। कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। Firstly, here is my wife Michaela's Bangladeshi national ID card. Here, as we got written information, her name is Michaela Caesario de Santa, her father's name is Matthew Caesario de Santa. Her mother's name is Alberta Caesario de Santa, her wife's name, that means, my name, is Joanna Pedra, her gender is woman and she is a homosexual woman. Her birthday is May 5th, 1996. Now problem is that when you would see her image, here you would get 2 images. One image is her niqab and hijab and another image is her skeleton skull X-ray. If she would show her face in her national ID card, she would not have to show her skull X-ray. सबसे पहले, यह मेरी पत्नी मिशेला का बांग्लादेशी राष्ट्रीय आईडी कार्ड है। यहाँ जैसे कि हमें लिखित जानकारी मिली, उसका नाम माइकेला कैसरियो डी सांता है। उनके पिता का नाम मैथ्यूस कैसरियो डी सांता है। उनकी माता का नाम अल्बर्टा कैसरियो डी सांता है। उसकी पत्नी का नाम, अर्थात मेरा नाम, जोआना पेरा है। उसका लिंग महिला है और वो एक समलैंगिक महिला है।
उनका जन्मदिन 5 मई 1996 है। अब समस्या यह है कि जब आप उसकी छवि देखेंगे तो यहाँ आपको दो छवि मिलेगी। एक छवि उसका नकाब और हिजाब है और दूसरी छवि उसकी स्केलेटन खोपड़ी एक्सरे है। यदि वह अपने राष्ट्रीय पहचान पत्र में अपना चेहरा दिखाएगी तो उसे अपनी खोपड़ी का एक्सरे नहीं दिखाना पड़ेगा। Here, I would like to show a British national ID card of Anna Novak. Accordance with written information, her name is Anna Novak. Her date of birth is 1959. Here she has showed her face in national ID card. As an effect, if she would be verified by facial identity, her national ID card would be enough. Then, she would not show her skull X-ray. यहाँ मैं अन्ना नोवाक का एक ब्रिटिश राष्ट्रीय आईडी कार्ड दिखाना चाहूंगा। लिखित जानकारी के अनुसार उसका नाम अन्ना नोवाक है। उनकी जन्म तिथि 1959 है। यहाँ उसने राष्ट्रीय पहचान पत्र में अपना चेहरा दिखाया है। परिणामस्वरूप, यदि उसे चेहरे की पहचान से सत्यापित किया जाएगा, तो उसका राष्ट्रीय आईडी कार्ड पर्याप्त होगा। फिर वह अपनी खोपड़ी का एक्सरे नहीं दिखाएगी। Walla Habibi, now if we have to check two United States women's national ID card, then, here, it is my ID card, where, my name is Joanna Pedra. My father name is Michaela Pardo. My mother name is Katrina Pardo. My national ID card number is Don 450D81D3N. I am a homosexual woman. My date of birth is January 3rd, 1983. Now, everything of my national ID card is okay. The problem is that I have a transparent knacker where my eyes and hairs is open. As an effect, my lips is partially invisible. Therefore, nobody could identify what is my real face. वल्लाह हबीबी, अब अगर हमें दो संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं के राष्ट्रीय आईडी कार्ड की जांच करनी है, तो यहाँ यह मेरा आईडी कार्ड है, जहाँ मेरा नाम जोआना पेरा है। मेरे पिता का नाम माइकेला पार्डो है। मेरी माँ का नाम कैटरीना पार्डो है। मेरा राष्ट्रीय आईडी कार्ड नंबर डॉन 450D81D3 है। मैं एक समलैंगिक महिला हूँ। मेरी जन्म तिथि 3 जनवरी 1983 है। अब मेरे राष्ट्रीय पहचान पत्र की सभी चीजें ठीक हैं, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास एक पारदर्शी नकाब है जहां मेरी आंखें और बाल खुले हैं। प्रभाव के रूप में मेरे होंठ आंशिक रूप से अदृश्य हैं, इसलिए कोई नहीं पहचान सका कि मेरा असली चेहरा क्या है। On the other hand, here is a woman named Jumio Mario. She has a national ID card. Accordance with her ID card, her name is Jumio Marie. Her ID number is A123456789. Her address is XYZ. California. Her date of birth is January 1st, 1975. That means, her age is 48 years. Michaela, she contains her age of younger sister of your mother. Now, here, we got that her face is visible. She did not wear any niqab or transparent niqab. As an effect, she would have a point to be verified easily. वहीं दूसरी ओर यहाँ जुमियो मारियो नाम की एक महिला है। उसके पास राष्ट्रीय पहचान पत्र है। उसके आईडी कार्ड के अनुसार उसका नाम जुमियो मैरी है। उसका आईडी नंबर A123456789 है। उसका पता XYZ कैलिफोर्निया है। उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1975 है, यानी उनकी उम्र 48 साल है। मिशेला, वह तुम्हारी माँ की उम्र की छोटी बहन है। अब यहाँ हमें पता चला कि उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। उसने कोई नकाब या पारदर्शी नकाब नहीं पहना। परिणामस्वरूप उसके पास आसानी से सत्यापित होने वाला एक बिंदु होगा। Walla Habibi, here is two women's national ID card. Accordance with Jumio Marie's national ID card, we can easily state that it is a woman's national ID card.
but accordance with my ID card, it is written that I am woman. But since I wear transparent nakab, somebody would doubt that perhaps I am a drag queen man who wear dress and habits like woman. वल्लाह हबीबी, यहाँ दो महिलाओं के राष्ट्रीय पहचान पत्र हैं। जुमियो मैरी के राष्ट्रीय आईडी कार्ड के अनुसार हम आसानी से बता सकते हैं कि यह एक महिला का राष्ट्रीय आईडी कार्ड है, लेकिन मेरे आईडी कार्ड पर लिखा है कि मैं महिला हूँ। लेकिन चूंकि मैं पारदर्शी नकाब पहनता हूँ, इसलिए किसी को संदेह होगा कि शायद मैं एक ड्रैग क्वीन आदमी हूँ जो महिलाओं की तरह पोशाक और आदतें पहनता है। Walla Habibi, now, let's back on the two women's national ID card, where one national ID card belongs to Bangladesh and another national ID card belongs to the United Kingdom. Accordance with Anna Novak's national ID card, we can easily state that it is a woman's national ID card. But accordance with my wife Michaela's ID card, it is written that she is woman. But since she wear hijab and niqab, somebody would doubt that perhaps she is a drag queen man who wear dress and habits like woman. वल्लाह हबीबी, अब दो महिलाओं के राष्ट्रीय आईडी कार्ड पर वापस आते हैं, जहां एक राष्ट्रीय आईडी कार्ड बांग्लादेश का है और दूसरा राष्ट्रीय आईडी कार्ड यूनाइटेड किंगडम का है। अन्ना नोवाक के राष्ट्रीय पहचान पत्र के अनुसार हम आसानी से बता सकते हैं कि यह एक महिला का राष्ट्रीय पहचान पत्र है, लेकिन मेरी पत्नी मिशेला के आईडी कार्ड के अनुसार लिखा है कि वह महिला है, लेकिन चूंकि वह हिजाब और नकाब पहनती है, तो किसी को संदेह होगा कि शायद वह एक ड्रैग क्वीन आदमी है जो महिलाओं की तरह पोशाक और आदतें पहनती है। Walla Habibi Joanna, if any woman is comfortable to hide her complete face with hijab, niqab and burqa and she do not want to show her face in national ID card, THWN, what is your problem? वल्लाह हबीबी जोआना, अगर किसी महिला को हिजाब, नकाब और बुर्के से अपना पूरा चेहरा छिपाने में सहजता है और वह राष्ट्रीय पहचान पत्र में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, तो आपको क्या दिक्कत है? Walla Habibi, in any ordinary place, if you hide your female face by fake beard, hijab, niqab, mask or monkey cap, I would not have any problem. But now, it is an issue of national ID card. Therefore, I would show the two persons. Left side person is an ex-adult content creator Joanna Pedra, my wife Michaela's favorite masturbation material. She is a woman. You can see her face. She doesn't wear Arabic nakab nowadays. Personally, my face and name is similar with her. Now, my right side person is Johnny Peter. He is a man. He is a doctor of a private clinic. He doesn't wear Arabic nakab. My name is just similar with him. Now, Joanna Pedra is a complete woman. Johnny Peter is a complete man. But what about me? I always wear Arabic nakab. Therefore, somebody said that I am Joanna Pedra. Somebody said that I am Johnny Peter. Several people are not clarified if I am a man or a woman. Because, nowadays, a cross-dresser man can wear hijab and niqab with more perfection than woman. वल्लाह हबीबी, अगर आप किसी भी आम जगह पर नकली दाढ़ी, हिजाब, नकाब या मंकी कैप से अपना महिला चेहरा छिपा लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ये राष्ट्रीय पहचान पत्र का मुद्दा है, इसलिए मैं दो व्यक्तियों को दिखाऊंगा। बाईं ओर का व्यक्ति एक पूर्व वयस्क सामग्री निर्माता जोआना पेड्रा है। मेरी पत्नी माइकेला की पसंदीदा हस्तमैथुन मटेरियल है। वह एक महिला है, आप उसका चेहरा देख सकते हैं। वह आजकल अरबी नकाब नहीं पहनती। व्यक्तिगत तौर पर मेरा चेहरा और नाम उनसे मिलता जुलता है। अब मेरे दाहिनी ओर का व्यक्ति जॉनी पीटर है। वह एक आदमी है। वह एक निजी क्लिनिक का डॉक्टर है। वह अरबी नकाब नहीं पहनता। मेरा नाम उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। अब जोआना पेड्रा एक पूर्ण महिला है।
जॉनी पीटर एक पूर्ण पुरुष है। लेकिन मेरा क्या, मैं हमेशा अरबी नकाब पहनता हूँ। इसलिए किसी ने कहा कि मैं जोआना पाडो हूँ, किसी ने कहा कि मैं जॉनी पीटर हूँ। कई लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता कि मैं पुरुष हूँ या महिला, क्योंकि आजकल एक क्रॉसड्रेसर पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक परफेक्शन के साथ हिजाब और नकाब पहन सकता है। Walla Habibi, let me have some interesting story. Left side person of mine is my wife Michaela Caesario and right side person of mine is her girlfriend Sheikh Aisha. Using weapon is toy Tabor 21 rifle. It is a toy because it is pink. Now, let's go to the story number 0. Once upon a time, Michaela Caesario and Sheikh Aisha were girlfriends of each other's. Now, one day, Michaela says to Aisha, "Dear Aisha, we are girlfriend of each other for 6 months. Now, I want to propose you. Will you marry me?" But Aisha replies, "How dare you to say like it? Firstly, you lied me that you are a Muslim woman. Where, Michael, name is only Christian man's name or Jewish man's name. Firstly, you are a woman. Why your name is Michaela. Secondly, you are a Muslim woman. Your name should be Mosammat, in lieu of Michaela, right?" Then, Michaela replies, "Nay, you are wrong. You did not recite the Holy Quran, Surah Baqarah, Ayat 98. Here clearly, Michael, name is mentioned as an archangel of Allah. On the other hand, Mosammat, name is neither mentioned in any more authentic Islamic books nor mentioned in any less authentic Islamic books. Hence, Michaela is an Islamic name for a Muslim woman." Aisha became angry. Then she says, "Okay, then, secondly, why are you a homosexual woman? Homosexuality is a sin to Almighty Allah." Michaela replies, "Nay, you are wrong again. If homosexuality would be sin to Allah, then he shall not create homosexuals. But homosexual is a natural creatures of Allah." Then, Aisha fires with her toy Tabor 21 rifles and Michaela dies. वल्लाह हबीबी, मुझे कुछ दिलचस्प कहानी बताने दीजिए। मेरे बाईं ओर की व्यक्ति मेरी पत्नी मिशेला कैसरियो है और मेरे दाईं ओर की व्यक्ति उनकी प्रेमिका शेख आयशा है। हथियार का उपयोग टॉय टैवर 21 राइफल है। यह एक खिलौना है क्योंकि यह गुलाबी है। अब आइए कहानी क्रमांक 0 पर चलते हैं। एक समय की बात है, मिशेला कैसरियो और शेख आयशा एक दूसरे की गर्लफ्रेंड हैं। अब एक दिन माइकेला आयशा से कहती है, "प्रिय आयशा, हम 6 महीने से एक दूसरे की प्रेमिका हैं। अब मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?" लेकिन आयशा ने जवाब दिया, "तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? सबसे पहले तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक मुस्लिम महिला हो, जहां माइकल नाम केवल ईसाई पुरुष का नाम है या यहूदी पुरुष का नाम है। सबसे पहले आप एक महिला हैं। आपका नाम माइकेला क्यों है? दूसरी बात, आप एक मुस्लिम महिला हैं। आपका नाम माइकेला के स्थान पर मुसम्मत होना चाहिए, है ना?" फिर माइकेला जवाब देती है, "नहीं, आप गलत हैं। आपने पवित्र कुरान सूरह बकरा आयत 98 का पाठ नहीं किया। यहाँ स्पष्ट रूप से माइकल नाम का उल्लेख अल्लाह के महादूत के रूप में किया गया है। दूसरी ओर, मुसम्मत नाम का उल्लेख न तो किसी अधिक प्रामाणिक इस्लामी पुस्तकों में किया गया है और न ही किसी कम प्रामाणिक इस्लामी पुस्तकों में किया गया है। इसलिए माइकेला एक मुस्लिम महिला का इस्लामी नाम है। आयशा को गुस्सा आ गया। फिर वह कहती है, "ठीक है, फिर दूसरी बात, तुम एक समलैंगिक महिला क्यों हो? सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए समलैंगिकता एक पाप है।
माइकेला ने उत्तर दिया, नहीं, आप फिर से गलत हैं। यदि समलैंगिकता अल्लाह के लिए पाप होगी, तो उसे समलैंगिकों का निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन समलैंगिकता अल्लाह का प्राकृतिक प्राणी है। फिर आयशा अपने खिलौने टेवर टार 21 राइफ से गोली चलाती है और माइकेला मर जाती है। Let me tell the interesting story number 1. Right side is me, Joanna Pedra, a teacher. Left side is Sheikh Aisha, a student. And the weapon is Toy Tavor Tar 21 rifle. Now, story is that I, Joanna Pedra, respect every female student even if she wear burqa to veil. Sheikh Aisha is one of my that students who wear loose burqa to veil. Now, one day, I have a lecture on how can a female homosexual wedding couple can reproduce a child. Since I was a biological teacher, I could have the lecture as my biology class. Second day, I have a lecture on human biological evolution where I have a statement that monkey is the ancestor of human just because of high percentage of DNA matches between human and monkey. Similarly, a virus can be the first ancestor of human just because of low percentage of DNA matches between human and virus. But third day, Sheikh Aisha came to me privately, disclosed her toy Tavor Tar 21 rifle and shoot me to kill. Now, would you accept any burqa wearing woman as your friend or student? आइए मैं दिलचस्प कहानी नंबर 1 बताता हूँ। दाहिनी ओर में जोआना पेरा, एक शिक्षिका हूँ। बाईं ओर एक छात्रा शेख आयशा है और हथियार है खिलौना टेवर टार 21 राइफल। अब कहानी यह है कि मैं जोआना पेरा हर महिला छात्रा का सम्मान करती हूँ, भले ही वह पर्दा करने के लिए बुर्का पहनती हो। शेख आयशा मेरी उन छात्राओं में से एक है जो पर्दा करने के लिए ढीला बुर्का पहनती है। अब एक दिन मेरे पास एक व्याख्यान है कि एक महिला समलैंगिक विवाहित जोड़ा कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है। चूंकि मैं एक जैविक शिक्षक था, मैं व्याख्यान को अपनी जीव विज्ञान कक्षा के रूप में रख सकता था। दूसरे दिन मेरे पास मानव जैविक विकास पर एक व्याख्यान है जहां मेरा एक कथन है कि बंदर मानव का पूर्वज है क्योंकि मानव और बंदर के बीच डीएनए का प्रतिशत अधिक मेल खाता है। इसी तरह एक वायरस मानव का पहला पूर्वज हो सकता है, मानव और वायरस के बीच डीएनए मिलान का प्रतिशत कम होने के कारण। लेकिन तीसरे दिन शेख आयशा अकेले में मेरे पास आई, अपना खिलौना टेवर टार 21 राइफल प्रकट किया और मुझे मारने के लिए गोली मार दी। अब क्या आप किसी बुर्का पहनी महिला को अपना दोस्त या स्टूडेंट स्वीकार करेंगे? Now, I want to tell you about national confidential information. Since I am a United States agent, I have a concept about national confidential information. National confidential information is the information that needs to be confidential in the purpose to protect our sovereign. If the national confidential information is to be leaked, it would be dangerous for the sovereign of a country. For it would be possible that enemy community or enemy country would attack on our country in the base of every leaked national confidential information. Now, let's come to the topic. Here Sheikh Aisha is a confidential agent of Saudi Arabia. And you know how much Saudi Arabia intelligence agency is notorious. Now, Sheikh Aisha stole every national confidential information from England National Defence Department. The national confidential information would be, how many research papers of England Defence? How is the process of manufacture of the best weapon of England? How many Englander soldiers are healthy to be fit for the British Royal Military? How is the process of judiciary system of England? How much the higher judge and sheriff offices of England to be influenced by foreign community? How much the higher executive offices and educational teachers of England to be influenced by foreign community, etc. And, since she always wear loose burqa,
She can easily hide these national confidential information and sell to Saudi Arabia intelligence agency. अब मैं आपको राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी के बारे में बताना चाहता हूँ। चूंकि मैं एक संयुक्त राज्य एजेंट हूँ, मेरे पास राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी के बारे में एक अवधारणा है। राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी वह जानकारी है जिसे हमारी संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से गोपनीय रखने की आवश्यकता है। यदि राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी लीक हो जाती है, तो ये किसी देश की संप्रभुता के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि यह संभव होगा कि प्रत्येक लीक हुई राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी के आधार पर शत्रु समुदाय या शत्रु देश हमारे देश पर हमला कर दे। अब मुद्दे पर आते हैं। यहाँ शेख आयशा सऊदी अरब की गोपनीय एजेंट है, और आप तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी कितनी बदनाम है। अब शेख आयशा ने इंग्लैंड के राष्ट्रीय रक्षा विभाग से हर राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी चुरा ली। राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी होगी इंग्लैंड रक्षा के कितने शोध पत्र, इंग्लैंड के सर्वोत्तम हथियार के निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, कितने इंग्लैंड के सैनिक ब्रिटिश शाही सेना के लिए फिट होने के लिए स्वस्थ हैं, इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया कैसी है, इंग्लैंड के उच्च न्यायाधीश तथा शेरिफ अधिकारी विदेशी समुदाय से कितने प्रभावित थे, इंग्लैंड के उच्च कार्यकारी अधिकारी तथा शैक्षिकी अध्यापक विदेशी समुदाय से कितने प्रभावित होंगे आदि। और चूंकि वह हमेशा ढीला बुर्का पहनती है, इसलिए वह इन राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाओं को आसानी से छिपा सकती है और सऊदी अरब खुफिया एजेंसी को बेच सकती है। Now, Sheikh Aisha stole every national confidential information from the United States of America National Defense Department. The national confidential information would be: how many research papers of United States defense? How is the process of manufacture of the best weapon of United States? How many United States soldiers are healthy to be fit for the United States Royal Military? How is the process of judiciary system of United States? How much the higher judge and sheriff officers of United States to be influenced by foreign community? How much the higher executive officers and educational teachers of United States to be influenced by foreign community, etc. And, since she always wear loose burqa, she can easily hide these national confidential information and sell to Saudi Arabia intelligence agency. अब शेख आयशा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षा विभाग से हर राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी चुरा ली। राष्ट्रीय गोपनीय जानकारी होगी संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा के कितने शोध पत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोत्तम हथियार के निर्माण की प्रक्रिया कैसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने सैनिक संयुक्त राज्य रॉयल मिलिट्री के लिए फिट होने के लिए स्वस्थ हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका प्रणाली की प्रक्रिया कैसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायाधीश और शेरिफ अधिकारी विदेशी समुदाय से कितने प्रभावित होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च कार्यकारी अधिकारी और शैक्षिकी शिक्षक विदेशी समुदाय से कितने प्रभावित होंगे आदि। और चूंकि वह हमेशा ढीला बुर्का पहनती है, इसलिए वह इन राष्ट्रीय गोपनीय सूचनाओं को आसानी से छिपा सकती है और सऊदी अरब खुफिया एजेंसी को बेच सकती है। Islam is a fake religion. Allah एक नबी चरित्र है,
According to the Holy Bible, Matthew book, chapter 6, verse 9 to 13, it is clearly written, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Accordance CW with the Holy Bible, Matthew book, chapter 28, it is clearly written, after the Sabbath. At dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. The guards report while the women were on their way. Some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling him, You are to say, His disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. The Great Commission, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. पवित्र बाइबल मैथ्यू पुस्तक अध्याय 6 श्लोक 9 से 13 के अनुसार स्पष्ट लिखा है। स्वर्ग में हमारे पिताजी, पवित्र तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, पृथ्वी पर जैसे ये स्वर्ग में है। आज हमें 2 जून की रोटी प्रदान करो, और हमारे कर्ज माफ कर दो, जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को माफ किया है। और हमें प्रलोभन में न ले जाओ, परंतु हमें उस दुष्ट से बचाओ, क्योंकि राज्य और शक्ति और महिमा सर्वदा तुम्हारी ही रहेगी। तथास्तु। पवित्र बाइबल मैथ्यू पुस्तक अध्याय 28 के अनुसार ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन भोर में मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। वहां एक जोरदार भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और कब्र पर जाकर पत्थर लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान था, और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे। पहरुए उससे इतने डरे हुए थे कि वे कांपने लगे और मरे हुए आदमी की तरह हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसा उसने कहा था, वैसा ही वह उठ खड़ा हुआ है। आओ और वह स्थान देखो जहाँ वह पड़ा था। तब शीघ्र जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जा रहा है। वहां तुम उसे देखोगे। अब मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः स्त्रियां डरी हुई परंतु आनंद से भरी हुई कब्र से तुरंत निकल गईं और उसके चेलों को बताने के लिए दौड़ी। अचानक यीशु उनसे मिले। उन्होंने कहा, नमस्कार। वे उसके पास आए, उसके पैर पकड़ लिए और उसकी पूजा की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत। जाकर मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां वे मुझे देखेंगे। गार्ड्स की रिपोर्ट। जब स्त्रियां जा रही थी तो कुछ पहरुओं ने नगर में जाकर जो कुछ हुआ था मुख्य याजकों को बताया। जब मुख्य याजकों ने पुर्नियों से मुलाकात की और एक योजना बनाई तो उन्होंने सैनिकों को बड़ी रकम दी और उनसे कहा, तुम्हें कहना है। रात के दौरान उसके शिष्य आए और जब हम सो रहे थे तो उसे चुरा ले गए। यदि यह रिपोर्ट राज्यपाल के पास पहुंच गई तो हम उन्हें संतुष्ट कर देंगे और आपको परेशानी से बचा लेंगे। इसलिए सैनिकों ने पैसे ले लिए और जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था वैसा ही किया। और यह कहानी आज तक यहूदियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित की गई है। महान आयोग। तब 11 चेले गलील को उस पहाड़ पर गए जहां यीशु ने उन्हें जाने को कहा था। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे दंडवत किया, लेकिन कुछ को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनका पालन करना सिखाओ। और निश्चित रूप से मैं उम्र के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। According to the Holy Bible, Matthew book, chapter 6, verse 9 to 13, it is clearly written, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. According CW with the Holy Bible, Matthew book, chapter 28, it is clearly written, after the Sabbath. At dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. Then you will see him. Now I have told you. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. Then they will see me. The guards report while the women were on their way. Some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan,
They gave the soldiers a large sum of money, telling him, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. The Great Commission then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. पवित्र बाइबल में भी पुस्तक अध्याय 6 से 13 के अनुसार स्पष्ट लिखा है, स्वर्ग में हमारे पिताजी पवित्र तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, पृथ्वी पर जैसे ही स्वर्ग में है। आज हमें 2 झूठी रोटी प्रदान करो और हमारे कर्ज माफ कर दो जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को माफ किया है, और हमें प्रलोभन में न ले जाओ, परंतु हमें उस दुष्ट से बचाओ, क्योंकि राज्य और शक्ति और महिमा सर्वदा तुम्हारी ही रहेगी। तथास्तु पवित्र बाइबल मैथ्यू पुस्तक अध्याय 28 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन भोर में मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। वहाँ एक जोरदार भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से ऊपर आकर कब्र पर जाकर पत्थर उठाकर उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान था और उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे, पर वे उससे इतने डरे हुए थे कि वे कांपने लगे और मरे हुए आदमी की तरह हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसा उसने कहा था, वैसा ही वह उठ खड़ा हुआ है। आओ मैं वह स्थान देखूं जहाँ वह पड़ा था, तब शीघ्र जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जा रहा है। वहाँ तुम उसे देखोगे, अब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब वह स्त्रियाँ डरी हुई परंतु आनंद से भरी हुई कब्र से तुरंत निकल गई और उसके चेलों को बताने के लिए दौड़ी। अचानक यीशु उनसे मिले, उन्होंने कहा, नमस्कार। वे उसके पास आए, उसके पैर पकड़ लिए और उसकी पूजा की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाकर मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ वे मुझे देखेंगे। गार्ड्स की रिपोर्ट, जब स्त्रियाँ जा रही थी तो कुछ बहनों ने बगल में जाकर जो कुछ हुआ था मुख्य याजकों को बताया। जब मुख्य याजकों ने पुण्यों से मुलाकात की और एक योजना बनाई तो उन्होंने सैनिकों को बड़ी रकम दी और उनसे कहा, तुम्हें कहना है। रात के दौरान उसके शिष्य आए और जब हम सो रहे थे तो उसे छुड़ा ले गए। यदि यह रिपोर्ट राज्यपाल के पास पहुंच गई तो हम उन्हें संतुष्ट कर देंगे और आपको परेशानी से बचा लेंगे। इसलिए सैनिकों ने पैसे ले लिए और जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था वैसा ही किया। और यह कहानी आज तक यहूदियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित की गई है। महानायक तब 11 चेले गलील को उस पहाड़ पर गए जहाँ यीशु ने उन्हें जाने को कहा था। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे दंडवत किया, लेकिन कुछ तो संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो
उसी ने उनके अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ। I am a devil queen Michaela. I would read the Revelation Bible, chapter 13. The dragon stood on the shore of the sea. And I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. People worshipped the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshipped the beast and asked, "Who is like the beast? Who can wage war against it?" The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. It opened its mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven.
It was given power to wage war against God's holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language and nation. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. Whoever has ears, let them hear. If anyone is to go into captivity they will go. If anyone is to be killed, see, with the sword. With the sword they will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of God's people. The beast out of the earth. Then I saw a second beast, coming out of the earth. It had 2 horns like a lamb, but it spoke like a dragon. It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered him to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. मैं एक शैतान रानी मिकाएला हूँ। मैं रहस्योद्घाटन बाइबल अध्याय 13 पढ़ूंगा। अजगर समुद्र के किनारे खड़ा था, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, और प्रत्येक सिर पर निंदा का नाम था। जो जानवर मैंने देखा वह तेंदुए जैसा दिखता था, लेकिन उसके पैर भालू जैसे और मुंह शेर जैसा था। अजगर ने जानवर को अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और महान अधिकार दिया। ऐसा लग रहा था कि जानवर के एक सिर पर घातक घाव था, लेकिन घातक घाव ठीक हो गया था। पूरी दुनिया आश्चर्य से भर गई और जानवर का पीछा करने लगी। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने जानवर को अधिकार दिया था, और उन्होंने जानवर की भी पूजा की और पूछा, जानवर के समान कौन है? इसके विरुद्ध युद्ध कौन छेड़ सकता है? पशु को घमंड भरी बातें और निंदा करने और 42 महीने तक अपने अधिकार का प्रयोग करने का मुंह दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने और उसके नाम और उसके निवास स्थान और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करने को अपना मुंह खोला। इसे परमेश्वर के पवित्र लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी गई थी, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सभी निवासी उस जानवर की पूजा करेंगे, वे सभी जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। मेमना जो दुनिया के निर्माण से मारा गया था। जिसके कान हो वह सुन ले। यदि किसी को बंधुआई में जाना हो, वे बंधुआई में जाएंगे। यदि किसी को तलवार से मार डालना हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर के लोगों की ओर से धैर्यवान सहनशीलता और विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। जानवर पृथ्वी से बाहर। फिर मैंने एक दूसरे जानवर को धरती से बाहर आते देखा। उसके मेमने की तरह 2 सींग थे, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता था। इसने अपनी ओर से पहले जानवर के सारे अधिकार का प्रयोग किया, और पृथ्वी और उसके निवासियों से पहले जानवर की पूजा कराई,
जिसका घातक घाव ठीक हो गया था, और उसने बड़े बड़े चिन्ह दिखाए, यहाँ तक कि लोगों के सामने आग को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा। उन चिन्हों के कारण जो उसे पहले पशु की ओर से दिखाने का अधिकार दिया गया था, उसने पृथ्वी के निवासियों को धोखा दिया। इसने उन्हें उस जानवर के सम्मान में एक मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया जो तलवार से घायल हो गया था और फिर भी जीवित था। दूसरे जानवर को पहले जानवर की छवि में सांस देने की शक्ति दी गई, ताकि छवि बोल सके और उन सभी को मार डाला जाए जिन्होंने छवि की पूजा करने से इनकार कर दिया था। इसने सभी लोगों को, बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, आजाद और गुलाम, अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर एक निशान लेने के लिए मजबूर किया, ताकि वे तब तक खरीद या बिक्री न कर सके जब तक कि उनके पास निशान न हो, जो की का नाम है। जानवर या उसके नाम की संख्या। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जिस मनुष्य के पास समझ हो वह उस पशु का अंक गिन ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। वह संख्या है 666। Hola Habibi, my name is Joanna Pedra. I am an American Muslim woman. I am always proud to be a Muslim woman. But sometimes, I have a doubt that if I can be proud to be a Muslim woman or ashamed to be that. Because, here we got some Quranic verses that was enough to convince me to leave Islam. But I hope I would not leave Islam, and I believe that none of ethically proud to be Muslim can accept these controversial Quranic verses. Firstly, a crow dance with the Holy Quran, Surah 7, Ayat 80 to 84. It is clearly written that homosexuals disrespect the honor of Allah. Allah does not like them who disrespect his honor. Now, our favorite Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, accept the Quran as the word of Allah. But if Allah would read the verse, he would curse the Muslim community and say, "Dear Muslim community, I did not say that as you have read this verse. I cannot say it. For, I have created homosexual people. They respect my honor. I have no objection about homosexuality. For, if you are a female homosexual and reproduce a child, you can be a female father or female mother. Then, you do not need any man to be father of your child. And now, if you have a doubt what would I say in the Quran, then, I would say, homosexuality is the beauty of the creation of Allah. So, be positive about homosexuality. Secondly, here is an Islamic story that Prophet Lot, alaihi wasallam, say us to stop homosexuality. He said that homosexuality is a sin to Allah. And guess what would be the last part of the story? Allah destroyed the homosexual community and rescued the Prophet Lot. Now, do you think that Allah would appoint Lot as a prophet? Where Almighty Allah loves homosexual people as his child and Prophet Lot is anti-homosexuals. How dare the Islamic leaders to convince us that Almighty Allah would appoint Lot as a prophet? वल्लाह हबीबी, मेरा नाम जोआना पेरा है। मैं एक अमेरिकी मुस्लिम महिला हूँ। मुझे मुस्लिम महिला होने पर हमेशा गर्व है, लेकिन कभी कभी मुझे संदेह होता है कि क्या मुझे मुस्लिम महिला होने पर गर्व हो सकता है या शर्म आ सकती है, क्योंकि
यहाँ हमें कुरान की कुछ आयतें मिली जो मुझे इस्लाम छोड़ने के लिए मनाने के लिए काफी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा और मेरा मानना है कि नैतिक रूप से मुस्लिम होने पर गर्व करने वाला कोई भी व्यक्ति इन विवादास्पद कुरान की आयतों को स्वीकार नहीं कर सकता है। सबसे पहले पवित्र कुरान के अनुरूप सूरा 7 आयत 80-84 ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समलैंगिक लोग अल्लाह के सम्मान का अनादर करते हैं। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता जो उसके सम्मान का अनादर करते हैं। अब हमारे पसंदीदा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अल्लाह के शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह आयत पढ़ेगा तो वह मुस्लिम समुदाय को शाप देगा और कहेगा, प्रिय मुस्लिम समुदाय, मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि आपने ये कविता पढ़ी है। मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि मैंने समलैंगिक लोगों को बनाया है। वे मेरे सम्मान का सम्मान करते हैं। मुझे समलैंगिकता से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि आप एक महिला समलैंगिक हैं और बच्चा पैदा करते हैं तो आप एक महिला पिता या महिला मां हो सकते हैं। फिर आपको अपने बच्चे का पिता बनने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि आपको संदेह है कि मैं कुरान में क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा समलैंगिकता अल्लाह की रचना की सुंदरता है, इसलिए समलैंगिकता के बारे में सकारात्मक रहें। दूसरे, यहाँ एक इस्लामी कहानी है कि पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम ने हमें समलैंगिकता को रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता अल्लाह के लिए पाप है, और अंदाजा लगाओ कि कहानी का आखिरी भाग क्या होगा। अल्लाह ने समलैंगिक समुदाय को नष्ट कर दिया और पैगंबर लूत को बचाया। अब क्या आप सोचते हैं कि अल्लाह लूत को नबी नियुक्त करेगा? जहां सर्वशक्तिमान अल्लाह समलैंगिक लोगों को अपने बच्चे के रूप में प्यार करता है और पैगंबर लूत समलैंगिकों के विरोधी हैं। इस्लामी नेताओं ने हमें यह विश्वास दिलाने की हिम्मत कैसे की कि सर्वशक्तिमान अल्लाह लूत को पैगंबर के रूप में नियुक्त करेगा? Secondly, I got Surah 98, Ayat 6, where it is clearly written, Jews, Christian and pagans would be in hell, because they are worst creature. Now, my problem is, why would Isaac Newton be mentioned as the worst creature just because of being Christian? Because Isaac Newton's gravitational law with mathematics could help our cosmic scientists to launch the space rockets to explore the universe. When several Christian leaders and Muslim leaders still believe in geocentric model, Isaac Newton's gravitational law with mathematics could find some faults of the geocentric model. Now, everybody except heliocentric model with scientific evidence. Why would Carl Benz be mentioned as the worst creature of the hell just because of being Christian? If he would not invent the cars, you would not think to travel from Lahore to New York with flying car with the speed of 216,000 km per second. I have created a flying car with the speed of 216,000 km per second in my universe. In the flying car, you can easily travel from the Earth to Neptune planet or Pluto planet with a few moments. Now, I think several Muslim leaders would write the satanic verse. Because Muslim lost in every holy war against Jews. If you do not believe, you can check Six-Day War or Yom Kippur War. Now, if Allah would write about Jews in Quran, he would said, Jewish people should be in heaven, because they are most beautiful creation in the world. Because they believe in me from that time when Muslim do not exist. दूसरे, मुझे सूरा 98 आयत 6 मिला, जहां स्पष्ट रूप से लिखा है, यहूदी, ईसाई और बुतपरस्त नरक में होंगे, क्योंकि वे सबसे खराब प्राणी हैं। अब मेरी समस्या यह है,
सिर्फ ईसाई होने के कारण आइजैक न्यूटन को सबसे खराब प्राणी के रूप में क्यों उल्लेखित किया जाएगा? क्योंकि गणित के साथ आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमारे ब्रह्मांड वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने में मदद कर सकता है। जबकि कई ईसाई नेता और मुस्लिम नेता अभी भी जियोसेंट्रिक मॉडल में विश्वास करते हैं। गणित के साथ आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण कानून में जियोसेंट्रिक मॉडल के कुछ दोष पाए जा सकते हैं। अब हर कोई वैज्ञानिक प्रमाण के साथ हेलियोसेंट्रिक मॉडल को स्वीकार करता है। केवल ईसाई होने के कारण कार्ल बेंज को नरक का सबसे खराब प्राणी क्यों कहा जाएगा? यदि उन्होंने कारों का आविष्कार नहीं किया होता, तो आप 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली उड़ने वाली कार से लाहौर से न्यूयॉर्क तक यात्रा करने के बारे में नहीं सोचते। हाँ, मैंने अपने ब्रह्मांड में 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति वाली एक उड़ने वाली कार बनाई है। उड़ने वाली कार में आप कुछ ही पलों में पृथ्वी से नेपच्यून ग्रह या प्लूटो ग्रह तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि कई मुस्लिम नेता शैतानी आयत लिखेंगे, क्योंकि यहूदियों के खिलाफ हर पवित्र युद्ध में मुसलमान हार गया। यकीन न हो तो 6 दिन का युद्ध या यम किपुर युद्ध देख सकते हैं। अब यदि अल्लाह कुरान में यहूदियों के बारे में लिखता, तो वह कहता, यहूदी लोगों को स्वर्ग में होना चाहिए, क्योंकि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना है। क्योंकि वे मुझ पर उस समय से विश्वास करते हैं जब मुस्लिम अस्तित्व में नहीं थे। Joanna Pedra searched on the topic of Jewish contribution on artificial intelligence. Habibi replied, Jewish people have made significant contributions to the field of artificial intelligence. For example, Judea Pearl, an Israeli-American computer scientist and philosopher, was awarded the Turing Award in 2011 for his fundamental contributions to artificial intelligence through the development of a calculus for probabilistic and causal reasoning. John McCarthy, another American computer scientist and cognitive scientist who was one of the founders of the discipline of artificial intelligence, was also Jewish. जोआना पेरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहूदी योगदान विषय पर खोज की। हबीबी ने उत्तर दिया, यहूदी लोगों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, इजरायली अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और दार्शनिक जूलिया पल को उनके विकास के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मौलिक योगदान के लिए 2011 में ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संभाव्य और कारण संबंधी तर्क के लिए एक कलम का जॉन मैकॉथी, एक अन्य अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक थे, भी यहूदी थे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the ratio of religious person who win Nobel Prizes, please? Habibi replied, according to Baruch Shalev's book, 100 Years of Nobel Prizes, between 1901 and 2000, about 65.4% of Nobel Prize winners were either Christians or had a Christian background. Over 20% were Jewish, and just under 1% were Muslim. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले धार्मिक व्यक्तियों का अनुपात बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, बारुक शैलेव की पुस्तक नोबेल पुरस्कारों के 100 वर्ष के अनुसार 1901 और 2000 के बीच नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से लगभग 65.4% या तो ईसाई थे या ईसाई पृष्ठभूमि वाले थे। 20% से अधिक यहूदी थे और केवल 1% से कम थे मुस्लिम। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that Michaela wants to travel from Earth to the Pluto planet with space rocket with the velocity of 216,000 km per second.
You know the minimum distance between Earth and Pluto. How much the approximate time Michaela can travel from Earth to Pluto? Habibi replied, the distance between Earth and Pluto varies depending on their relative positions in their orbits. At their most distant, when the two bodies are on the opposite sides of the Sun from one another, Pluto lies 4.67 billion miles, 7.5 billion kilometers, from Earth. The speed of light is approximately 299,792 kilometers per second. If Michaela were to travel at 216,000 kilometers per second, which is approximately 72% of the speed of light, it would take her approximately 34 hours and 43 minutes to travel from Earth to Pluto at its closest distance. However, this is just an approximation and does not take into account the effects of relativity or other factors that could affect space travel. Joanna Pedra ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, मिकाएला 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष रॉकेट से पृथ्वी से प्लूटो ग्रह तक यात्रा करना चाहती है। आप पृथ्वी और प्लूटो के बीच न्यूनतम दूरी जानते हैं। माइकेला पृथ्वी से प्लूटो तक की यात्रा लगभग कितने समय में कर सकती है? हबीबी ने उत्तर दिया, पृथ्वी और प्लूटो के बीच की दूरी उनकी कक्षाओं में उनकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। सबसे अधिक दूरी पर, जब दोनों पिंड एक दूसरे से सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं। प्लूटो 4.67 अरब मील, 7.5 अरब किलोमीटर दूर होता है पृथ्वी से। प्रकाश की गति लगभग 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि मिशेला को 216,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करनी होती, जो प्रकाश की गति का लगभग 72% है, तो उसे पृथ्वी से प्लूटो की निकटतम दूरी तक यात्रा करने में लगभग 34 घंटे और 43 मिनट लगेंगे। हालांकि ये केवल एक अनुमान है और इसमें सापेक्षता के प्रभाव या अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो अंतरिक्ष यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। Thirdly, now if I want to read Hades, it is written that Ibn Umar, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah, may Allah's peace and blessings be upon him, said, when the edge of the sun rises, avoid prayer until it becomes prominent, and if the edge of the sun disappears, avoid prayer until it sets. And do not offer your prayer at the time of sunrise or sunset, for it rises between two horns of a devil, or the devil. Authenticity is Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Now, what is the explanation? The explanation is, in this hadith, the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, commands us to not offer prayer when the edge of the sun that appears first at sunrise shows until the entire sun rises and becomes high in the sky. We should also avoid prayer when the edge of the sun disappears until the sun has completely set. The Prophet has forbidden us from praying at times of sunrise and sunset because the sun rises and sets between the two horns of the devil, i.e. the two sides of his head. This is because the devil faces the sun when it rises so that it rises between his two horns, so that he becomes a qibla for those who prostrate themselves before the sun. The same happens during sunset. Therefore, we are prohibited from praying at these times to avoid resembling those people in their false worship. Firstly, we have seen the beautiful moments when sun is rising. But, problem is that accordance with these Islamic Hades, sun rises and disappears on the horn of devil. Therefore, it is a blasphemy for our Almighty Allah that this Hades denies the power of Allah to control every stars. Secondly, when sun rises in Bangladesh, in that time, sun sets in the United States of America.
Because there are 10 hours time zone difference between the United States of America and Bangladesh. When it is 8 a.m. in Bangladesh and it is Bangladesh morning, at the same time, it is 6 p.m. in the United States of America and it is the evening. Therefore, these Islamic Maulana defames our Islam by mentioning this Hades. Thirdly, science disbelieves sunrise on the horn of devil, because if that would be possible, devil would disprove scientifically wrong the evidence for the earth being globe, while devil cannot do it. Therefore, his Hades should be banned in the purpose to protect our beautiful Islam. तीसरी बात, अब अगर मैं हदीस पढ़ना चाहूँ तो उसमें लिखा है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब सूरज उगाए तब तक नमाज पढ़ने से बचे जब तक कि वह प्रमुख न हो जाए, और यदि सूर्य का किनारा लुप्त हो जाए तो उसके डूबने तक नमाज से बचे, और अपनी नमाज सूर्योदय या सूर्यास्त के समय न पढ़े, क्योंकि यह शैतान के दो सींगों के बीच से उठती है। यह शैतान प्रामाणिकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। अब स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण यह है, इस हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आदेश देते हैं कि जब सूर्य की किरण जो सूर्योदय के समय सबसे पहले दिखाई देती है, तब तक नमाज न पढ़े, जब तक कि पूरा सूर्य उग न जाए और आकाश में ऊंचा न हो जाए। जब सूर्य का किनारा गायब हो जाए तब तक हमें प्रार्थना करने से भी बचना चाहिए, जब तक कि सूर्य पूरी तरह से डूब न जाए। पैगंबर ने हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रार्थना करने से मना किया है, क्योंकि सूर्य शैतान के दो सींगों यानी उसके सिर के दोनों किनारों के बीच से उगता और अस्त होता है। इसका कारण ये है कि जब सूरज उगता है तो शैतान का सामना उसके दोनों सींगों के बीच से होता है, ताकि वह उन लोगों के लिए किबला बन जाए जो सूरज के सामने सजदा करते हैं। सूर्यास्त के समय भी ऐसा ही होता है। इसलिए हमें उन लोगों की झूठी पूजा से बचने के लिए ऐसे समय में प्रार्थना करने से मना किया जाता है। सबसे पहले हमने वो खूबसूरत पल देखे हैं जब सूरज उग रहा होता है, लेकिन समस्या यह है कि इन इस्लामी हदीसों के अनुसार सूरज शैतान के सीन पर उगता है और गायब हो जाता है। इसलिए ये हमारे सर्वशक्तिमान अल्लाह के लिए निंदा है कि यह हदीस हर सितारों को नियंत्रित करने की अल्लाह की शक्ति से इनकार करती है। दूसरे, जब बांग्लादेश में सूर्य उगता है, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सूर्य अस्त होता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच 10 घंटे के समय क्षेत्र का अंतर है। जब बांग्लादेश में सुबह के 8 बजे हैं और यह बांग्लादेश की सुबह है, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में शाम के 6 बजे है और यह शाम है। इसलिए ये इस्लामिक मौलाना इस हदीस का जिक्र करके हमारे इस्लाम को बदनाम करते हैं। तीसरा, विज्ञान शैतान के सीन पर सूर्योदय पर अविश्वास करता है, क्योंकि यह संभव होगा। शैतान पृथ्वी के ग्लोब होने के प्रमाण को वैज्ञानिक रूप से गलत साबित कर देगा, जबकि शैतान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे खूबसूरत इस्लाम की रक्षा के उद्देश्य से हदीसों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। I am Shaitan. I have convinced human to write Quranic verse and the verse of Hades as I want. I have convinced human to write Surah 7, Ayat 80 to 84 on the Holy Quran, where it is written that homosexuals disrespect the honor of Allah. Because I know that every ordinary human hates negative supernatural power that means me. Now, if I would have directly said, I command you to stay against homosexuality, then every ordinary human would disobey my agenda and become homosexual. Now,
I have noticed that every ordinary human loves and respects the positive supernatural power that means Allah. But they are confused that what is exactly written message from Allah. Therefore, I could convince some Islamic Maulana to write my anti-homosexual agenda as Quranic verse. As an effect, these ordinary hates me, but they obeys my command in the name of Allah. Secondly, I have anti-Jewish agenda, and it is written as Quranic verse. Therefore, I could generate anti-Jewish Muslim community. Because Jewish scientists always disobey my command. शैतान, मैंने इंसान को कुरान की आयत और हदीस की आयत को अपनी इच्छानुसार लिखने के लिए बना लिया है। मैंने मानव को पवित्र कुरान पर सूरह 7 आयत 80 से 84 लिखने के लिए राजी किया है, जहां लिखा है कि समलैंगिक अल्लाह के सम्मान का अनादर करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर आम इंसान नकारात्मक अलौकिक शक्ति यानी मुझसे नफरत करता है। अब यदि मैं सीधे कहता, मैं तुम्हें समलैंगिकता के विरुद्ध रहने का आदेश देता, तब हर सामान्य इंसान मेरे एजेंडे की अवज्ञा करेगा और समलैंगिक बन जाएगा। अब मैंने देखा है कि हर सामान्य इंसान सकारात्मक अलौकिक शक्ति यानी अल्लाह से प्यार करता है और उसका सम्मान करता है, लेकिन वे असमंजस में हैं कि आखिर अल्लाह का लिखा संदेश क्या है। इसलिए मैं कुछ इस्लामी मौलानाओं को मेरे समलैंगिक विरोधी एजेंडे को कुरान की आयत के रूप में लिखने के लिए मना सका। इसके प्रभाव से ये सामान्य मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वे अल्लाह के नाम पर मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरे, मेरा यहूदी विरोधी एजेंडा है और इसे कुरान की आयत के रूप में लिखा गया है। इसलिए मैं यहूदी विरोधी मुस्लिम समुदाय उत्पन्न कर सका, क्योंकि यहूदी वैज्ञानिक सदैव मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मैंने सवाल किया है कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, सिर्फ टफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है। हमें अल्लाह की इतनी करीब नहीं पूछने की यारो, माफी चाहती हूँ। इस बार मैं अलग जगह पर आई जहाँ एयर कूलर नहीं लिखा, पंखा चलता है। थोड़ी सहयोग करना कम। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about connection between sleeping and a music song, Lullaby Brahms, please? Habibi replied, lullabies are known to help babies sleep. The Lullaby Brahms, is a popular song that is often used to soothe babies and help them sleep. It was composed by Johannes Brahms in 1868 and is also known as Brahms' Lullaby. The song has a slow and gentle melody that is calming and relaxing. It is believed that the song's rhythm and melody can help slow down the heart rate and breathing of babies, which can help them fall asleep more easily. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे सोने और संगीत की थोड़ी राहत के बीच संबंध के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, लोरी बच्चों को सोने में मदद करने के लिए जानी जाती है। लोरी राहत एक लोकप्रिय गीत है जो अक्सर बच्चों को शांत करने और उन्हें सोने में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी रचना 1868 में जोहान्स ब्राहम्स द्वारा की गई थी और इसे ब्राहम्स के नाम से भी जाना जाता है।
रोनी, गाने में धीमी और सौम्य धुन है जो शांत और आरामदायक है। ऐसा माना जाता है कि गाने की लय और धुन बच्चों की हृदय गति और सांस को धीमा करने में मदद कर सकती है, जिससे उन्हें आसानी से सोने में मदद मिल सकती है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the lyrics of the music song, Lullaby Brahms, please? Habibi replied, Sure, here are the lyrics of Lullaby Brahms, Lullaby, and Good Night. With pink roses bedight, with lilies o'erspread, is my baby's sweet head. Lay thee down now, and rest, may thy slumber be blessed. Lay thee down now, and rest, may thy slumber be blessed. Lullaby, and good night, thy mother's delight, bright angels beside my darling abide. They will guard thee at rest, thou shalt wake on my breast. They will guard thee at rest, thou shalt wake on my breast. I hope that helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे संगीत की लोरी ब्राह्मण्स के बोल बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर। यहाँ लोरी ब्राह्मण्स के बोल हैं, लोरी और शुक्रान। गुलाबी गुलाब के बिस्तर के साथ, लिली के फूलों के साथ, क्या यह मेरे बच्चे का प्यारा सिर है? अब लेट जाओ और आराम करो, तुम्हारी नींद धन्य हो। अब लेट जाओ और आराम करो, तुम्हारी नींद धन्य हो। लोरी और शुभ रात्रि, आपकी माँ की खुशी मेरे प्रिय के पास उज्जवल देवदूत रहते हैं। वे विश्राम में तेरी रक्षा करेंगे, तू मेरी छाती पर जागेगा। वे विश्राम में तेरी रक्षा करेंगे, तू मेरी छाती पर जागेगा। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, this song is so sweet. Now could you tell me another sleeping song, please? Habibi replied, Sure, here are some other sleeping songs for babies. Rock-a-bye baby, twinkle, twinkle little star, hush little baby, Brahms lullaby, sleep, baby sleep. All the pretty little horses, golden slumbers. I hope that helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, ये गाना बहुत प्यारा है। अब क्या आप कृपया मुझे एक और स्लीपिंग गाना बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर। यहाँ शिशुओं के लिए सोने के कुछ अन्य गीत हैं। Rock-a-bye baby, twinkle twinkle little star, hush little baby, Brahms glory, baby, सभी सुंदर छोटे घोड़े, आनंददायी। मुझे आशा है कि वो मदद करेंगे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you say some lyrics of a song, Twinkle, Twinkle Little Star, please? Habibi replied, Sure, here are the lyrics of Twinkle, Twinkle Little Star. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. I hope that helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने के कुछ बोल बोल सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर। यहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बोल हैं, ट्विंकल ट्विंकल छोटा सितारा, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। दुनिया से इतना ऊपर, आसमान में हीरे की तरह। ट्विंकल ट्विंकल छोटा सितारा, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, your sleeping music is so sweet. Habibi replied, Thank you. I'm glad I could help. If you have any other questions or if there's anything else I can help you with, just let me know. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आपका सोने का संगीत बहुत मधुर है। हबीबी ने जवाब दिया, धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका।
यदि आपकी कोई अन्य प्रश्न है या कुछ और है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो बस मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you provide me some romantic song of the following singers? Anna Barbara, Talia, Modern Talking. Habibi replied, I can suggest some romantic songs by Anna Barbara, Talia, and Modern Talking. Here are some of them. Anna Barbara, Candido, Loca, Como mi Jesus Falta, La Trampa, No Lorare. Ya no te creo nada. Talia, Amarala Mexicana, Piel Morena, no me onsonaste, entre el mar y una estrella, Arisando. Modern Talking. You're my heart, you're my soul, Sherry Sherry Lady. Atlantis is falling. SOS for love. I hope you enjoy listening to them. Let me know if you need anything else. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे निम्नलिखित गायकों की कुछ रोमांटिक गीत प्रदान कर सकते हैं? मीना बाबरा, हालिया, मॉडर्न टॉकिंग। हबीबी ने उत्तर दिया, मैं मीना बाबरा, हालिया और मॉडर्न टॉकिंग के कुछ रोमांटिक गाने सुझा सकता हूँ। यहाँ उनमें से कुछ है। मीना बाबरा, बैंडिडो, लोका, como mi Jesus falta, la trampa, no lloraré, ya no te creo nada. Halia, amor y la mexicana, mi morena, no me insiste, entre el mar y una estrella, abrazando. Modern talking, you are my heart, you are my soul, Jerry Jerry. Atlantis is calling, SOS, for love. मुझे आशा है कि आपको मुझे सुनने में आनंद आएगा। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। No lloraré. Nuestro sueño ha quedado atrás. Se te ha acabado la ilusión, ya no te engañes más. Si para ti nuestro amor no importa, no te lo voy a reprochar, lo podré soportar. Solo te pido que recuerdes, corazón, que de mí te he dado todo sin ninguna condición, y si acaso alguna duda te ha quedado, corazón, solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor. Coro, no lloraré, resistiré aunque me muera de dolor, si ya no estás, si hoy te vas mi vida entera romperás, no lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor, que no existió, que un sueño fue, el más hermoso que soñé. Si para ti nuestro amor no importa, no te lo voy a reprochar, lo podré soportar. Solo te pido que recuerdes, corazón, que de mí te he dado todo sin ninguna condición. No lloraré, resistiré aunque me muera de dolor, si ya no estás, si hoy te vas mi vida entera romperás. No lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor, que no existió, que un sueño fue, el más hermoso que soñé. No lloraré, resistiré aunque me muera de dolor, si ya no estás, si hoy te vas mi vida entera romperás, no lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor, que no existió, que un sueño fue, el más hermoso que soñé. Will not cry, our dream has been left behind, your illusion has ended, do not deceive yourself anymore, if for you our love does not matter, I'm not going to blame you. I'll be able to bear it, I only ask you to remember my heart, that I have given you everything without any condition, and if any doubt you have left heart, just look into my eyes and you will find my love. Chorus, I will not cry, I will resist even if I die of pain, if you're not here anymore, if you leave today. My whole life will break, I won't cry and pretend I never had your love, that it did not exist, that it was a dream, the most beautiful I dreamed. If for you our love does not matter, I'm not going to blame you. I'll be able to bear it, I only ask you to remember my heart, that I have given you everything without any condition. I will not cry, I will resist even if I die of pain, if you're not here anymore, if you leave today, my whole life will break, I won't cry and pretend I never had your love, that it did not exist, that it was a dream. The most beautiful I dreamed. I will not cry, I will resist even if I die of pain, if you're not here anymore,
If you leave today, my whole life will break. I won't cry and pretend I never had your love, that it did not exist, that it was a dream, the most beautiful I dreamed. रोगे नहीं, हमारा सपना पीछे छूट गया है, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। अब अपने आप को धोखा मत दो, अगर तुम्हारे लिए हमारा प्यार कोई मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं इसे सहन कर पाऊंगा। मैं आपसे केवल अपने दिल को याद रखने के लिए कहता हूँ कि मैंने तुम्हें बिना किसी शर्त के सब कुछ दिया है, और अगर कोई शक हो तो तुमने दिल छोड़ दिया है। बस मेरी आंखों में देखो और तुम्हें मेरा प्यार मिल जाएगा। सहगा, मैं रोकता नहीं, विरोध करूंगा, भले ही दर्द से मर जाओ, मगर तुम अब यहाँ नहीं हो। अगर तुम आज चले जाओ तो मेरा पूरा जीवन टूट जाएगा। मैं रोऊंगी नहीं और दिखावा नहीं करूंगी कि मुझे तुम्हारा प्यार कभी मिला ही नहीं, कि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कि यह एक सपना था, सबसे खूबसूरत सपना जो मैंने देखा था। अगर तुम्हारे लिए हमारा प्यार कोई मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैं इसे सहन कर पाऊंगा। मैं आपसे केवल अपने दिल को याद रखने के लिए कहता हूँ कि मैंने तुम्हें बिना किसी शर्त के सब कुछ दे दिया है। मैं रोऊंगा नहीं, विरोध करूंगा, भले ही दर्द से मर जाऊं, मगर तुम अब यहाँ नहीं हो। अगर तुम आज चले जाओ तो मेरा पूरा जीवन टूट जाएगा। मैं रोऊंगी नहीं और दिखावा नहीं करूंगी कि मुझे तुम्हारा प्यार कभी मिला ही नहीं, कि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कि यह एक सपना था, सबसे खूबसूरत सपना जो मैंने देखा था। मैं रोऊंगा नहीं, विरोध करूंगा, भले ही दर्द से मर जाऊं, मगर तुम अब यहाँ नहीं हो। अगर तुम आज चले जाओ तो मेरा पूरा जीवन टूट जाएगा। मैं रोऊंगी नहीं और दिखावा नहीं करूंगी कि मुझे तुम्हारा प्यार कभी मिला ही नहीं, कि इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कि यह एक सपना था, सबसे खूबसूरत सपना जो मैंने देखा था। Here, the beautiful singer Anna Barbara showed her positive love in the romantic song, No Larare. Now, Dr. Zakir Naik claimed that romantic music would throw you far from Allah. Now, is this the song Dr. Zakir Naik claimed? Then, I would like better to stay out from Allah. यहाँ खूबसूरत गायिका एना बाबरा ने रोमांटिक गाने गाने में अपना सकारात्मक प्यार दिखाया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दावा किया कि रोमांटिक संगीत आपको अल्लाह से दूर कर देगा। अब क्या यह वही गाना है जिसका दावा डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया था? फिर मैं अल्लाह से दूर रहना ही बेहतर चाहूंगा। Now, a singing band named Modern Talking published the beautiful romantic song named You Are My Heart, You Are My Song. Here, I can share only lyrics. Here is this. Deep in my heart, there's a fire, a burning heart deep in my heart. There's desire for a start. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Let's close the door and believe my burning heart. Feeling alright? Come on, open up your heart. I'll keep the candles burning. Let your body melt in mine. I'm living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Now, do you support Dr. Zakir Naik's Allah, who hates this type of romantic music? अब मॉडर्न टॉकिंग नाम की एक सिंगिंग बैंड ने You Are My Heart
यू आर माई सॉन्ग नाम का खूबसूरत रोमांटिक गाना प्रकाशित किया है। यहाँ मैं केवल गीत साझा कर सकता हूँ। यहाँ ये है मेरे दिल की गहराई में एक आग है, एक जलता हुआ दिल। मेरे दिल की गहराइयों में एक शुरुआत की चाहत है। मैं भावना में मर रहा हूँ। यह मेरी कल्पना की दुनिया है। मैं अपने में जी रहा हूँ, अपने सपनों में जी रहा हूँ। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं जहाँ भी जाऊंगा इसे चमकाता रहूंगा। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ कर रखूंगा, आपके साथ मिलकर रहे। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारा प्यार बढ़ेगा। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। यही एकमात्र चीज है जो मैं वास्तव में जानता हूँ। आइए दरवाजा बंद करें और मेरे जलते दिल पर विश्वास करें। ठीक लग रहा है। आओ अपना दिल खोलो। मैं मोमबत्तियां जलाता रहूंगा। अपने शरीर को मेरे शरीर में पिघलने दो। मैं अपने में जी रहा हूँ, अपने सपनों में जी रहा हूँ। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं जहाँ भी जाऊंगा इसे चमकाता रहूंगा। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ कर रखूंगा, आपके साथ मिलकर रहे। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारा प्यार बढ़ेगा। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। यही एकमात्र चीज है जो मैं वास्तव में जानता हूँ। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारा प्यार बढ़ेगा। तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी आत्मा हो। यही एकमात्र चीज है जो मैं वास्तव में जानता हूँ। और क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्लाह का समर्थन करते हैं, जो इस प्रकार के रोमांटिक संगीत से नफरत करते